कराची के शाहरा-ए-फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर ई टिकटिंग का निजाम फाल कर दिया गया। अब गलत लेन में गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने पर जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से। जी असलम, आगाह कीजिएगा। कराची में जो गलत ने इसमें गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने पर जुर्माना होगा। ट्रैफिक पुलिस जो की एक सही तो असलम खान हमारे साथ मौजूद थे। लेन की खिलाफ वर्जी शाहरा-ए-फैसल पर ई टिकटिंग का निजाम फाल कर दिया गया है। गलत लेन में गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने पर जुर्माना होगा, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये बताना है। खिलाफ वर्जी की निशानदही जदीद कैमरों के जरिए होगी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऐसा बताया गया है, जबकि कमर्शियल गाड़ियां मोटरसाइकिल बाई जानिब की 2 लेन इस्तेमाल करेंगी। तेज रफ्तार गाड़ियों के लिए दाई जानिब की 2 लेन मखसूस की गई हैं। तो आपको अपडेट करते चलें कि लेन की खिलाफ वर्जी शाहरा-ए-फैसल पर ई टिकटिंग का निजाम फाल कर दिया गया है। गलत लेन में गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने पर जुर्माना होगा। और आपको खबर दें, पंजाब काबीना ने पंजाब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रूल्स 2026 की मंजूरी दे दी है। प्राइवेट जनरेटर्स और सोलर पावर पर नई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास, आप बताइए तफसीलन। जी देखिए, पंजाब काबीना ने पंजाब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रूल 2026 की मंजूरी दे दी है। पंजाब में प्राइवेट जनरेटर्स और सोलर पावर पर नई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का फ्रेमवर्क जो तैयार कर लिया गया है। 500 केवी से एसी से जायद जनरेटर्स और सोलर सिस्टम ड्यूटी नेट में लाने की मंजूरी दी गई है। सनती और कमर्शियल सार्फिन पर 4 पैसा फी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आयद की जाएगी। इसके साथ साथ घरेलू सार्फिन को नई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से मुकम्मल इस्तिस्ना देने की सिफारिश की गई थी। पंजाब हुकूमत को सालाना 30 करोड़ 60 लाख रुपए इजाफी आमदन जो इस हवाले से मुतवक्का है। इसके साथ साथ 1177 सनती और कमर्शियल मुकामात नई ड्यूटी के दायरे में आएंगे। नए रूल्स के तहत इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को पावर जनरेशन सोलर सेल करने का इख्तियार मिल जाएगा। इसके साथ साथ ड्यूटी अदा करने वालों के हवाले से रिकवरी लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत की कार्रवाई की जाएगी। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को निजी पावर प्लांट का रिकॉर्ड चेक करने का इख्तियार देने की भी सिफारिश की गई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने अब तक का सबसे बड़ा तरक्याती बजट इस्तेमाल कर लिया। माली साल 2025-26 के दौरान 981 अरब 17 करोड़ का बजट तरक्याती मंसूबों पर लगाया गया है। उस्मान अलीम से तफसीलात जान लेते हैं। जी उस्मान, बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने अब तक का सबसे बड़ा तरक्याती बजट इस्तेमाल कर लिया है। तरक्याती मंसूबों की मद में 981 अरब 17 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए जा चुके हैं। रवा माली साल तरक्याती बजट की अगर बात कीजिए तो 1240 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किया गया, जिसमें 193 अरब रुपए के मंसूबे बाद में शामिल किए गए, जिसके बाद इसका मजमूई हुजम 1433 अरब रुपए तक जा पहुंचा। और इसमें से अब तक महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में 1376 अरब रुपए तरक्याती जो मंसूबे हैं उनकी मद में मंजूर किए, जिसमें महकमा खजाना ने अब तक 1233 अरब रुपए मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनके अकाउंट्स में मुंतकिल किए। और इस मुंतकिल शुदा बजट में से 981 अरब 17 करोड़ रुपए का बजट जो है वो इस्तेमाल किया जा चुका है। इतना बजट इस्तेमाल करने के बावजूद अब भी 30% से जायद तरक्याती बजट ऐसा है जो कि गैर इस्तेमाल शुदा है। अगर जारी तरक्याती मंसूबों की बात कीजिए तो इन पर अब तक 465 अरब 56 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जबकि नए मंसूबों पर 185 अरब से जायद का बजट इस्तेमाल किया गया, जबकि तरक्याती मंसूबों के बकाया जात की मद में 6 अरब से जायद की अदायगी की गई। स्पेशल मंसूबों की मद में 244 अरब 74 करोड़ रुपए का बजट भी इस्तेमाल किया जा चुका है, जबकि अगर गुज़िश्ता माली साल की बात कीजिए तो 966 अरब रुपए का बजट जो है वो इस्तेमाल किया गया था, जबकि माली साल 2023-24 में 570 अरब रुपए का बजट इस्तेमाल किया गया। और रवां साल सबसे ज्यादा 981 अरब 17 करोड़ रुपए का बजट अब तक इस्तेमाल किया जा चुका है। जी उस्मान, आपका शुक्रिया। शुगर सेक्टर की मुकम्मल डी रेगुलेशन के मामले पर वफाक और सिंध में डेडलॉक। वजारत सनत और पैदावार के ज़राए के मुताबिक शुगर एक्ट में तरमीम से मुतालिक वफाक की तजवीज़ सूबाई हुकूमत ने मुस्तरद कर दी है। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी ने मामला तय करने के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह से मिलने का फैसला कर लिया। IMF ने लाइसेंस कोटा ख़त्म करने समेत शुगर सेक्टर को मुकम्मल डी रेगुलराइज करने के लिए 30 जून की डेडलाइन दे रखी है। तो आपको बताएं इस हवाले से कि वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी ने मामला तय करने के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह से मिलने का फैसला कर लिया। फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन एक्सीलेंसी काजा क्लास, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। इट इज़ indeed my great pleasure to welcome the European Union's High Representative Foreign Affairs and Security Policy and the Vice President of the European Commission
Madam Kaja Kalas, on her first ever visit to Islamabad. The last EU HRVP visit took place in 2019, and since then, we had virtually for 7 years no visit. So EU Vice President Kaja Kalas' visit to Islamabad signifies the growing momentum in Pakistan-EU partnership. The HRVP has remained my frequent interlocutor. Our candid exchanges are reflective of the candor and trust between Pakistan and EU. We have been constantly in touch during last year of India-Pakistan war, and so are we in touch during the regional conflict between US and Iran. We believe that EU as an institution embodies the universal ideals of peace, diplomacy, democracy, and commitment to human rights. We remain committed to constructive engagement with EU and its member states. Today, Her Excellency and I co-chaired the 8th session of the Pakistan-EU Strategic Dialogue. This is the highest institutionalized dialogue between Pakistan and the EU. May I also point out that we had last 7th review in November in Brussels, and perhaps the gap between two dialogues is probably in our history the minimum between any two states. We reviewed the progress on cooperation under the various sectors of the Pakistan-EU Strategic Engagement Plan 2019, including trade, investment and development, human rights and rule of law, migration and mobility, and finally, security and counter-terrorism. The EU is amongst Pakistan's major trade partners, with a trade volume of around 12 billion euros. Pakistan-EU trade cooperation under GSP Plus framework is a win-win template. Our discussions today are focused on further enhancing bilateral trade and investment ties between EU and Pakistan. In this regard, both sides assessed the first ever Pakistan-EU Business Forum held in Islamabad in April this year as a welcome development. We look forward to making the forum a regular feature in our bilateral cooperation. We also held an in-depth exchange of views on regional and global issues, including the US-Iran conflict, security situation in South Asia, Afghanistan, Europe, and the Middle East. I thanked Her Excellency for EU's appreciation and supportive role for Pakistan's mediation efforts in the US-Iran conflict. We are humbled by the recognition of our efforts and will continue to work towards finding a comprehensive and lasting solution to the conflict. I also apprised Her Excellency of our concerns regarding unprovoked Indian aggression and Pakistan's principal position on the Jammu and Kashmir dispute, advocating for its resolution according to the wishes of the Kashmiri people in line with UN Security Council resolutions. Further, I shared that the Pakistan position on the Indus Water Treaty stands vindicated after the Court of Arbitration's supplemented award in the Indus Water Treaty proceedings arising from the Retal hydroelectric plant and the Kishan Ganga hydroelectric project design disputes. The award affirms Pakistan's central position that the treaty places substantive limits on India's water control capability on the western rivers. We have also discussed security issues and terrorism, including the presence of Fitna Khawarij and Fitna Hindustan elements on Afghan soil. Their continued attacks against Pakistan remain our top concern. I emphasized the need for strengthening multilateralism and consistent adherence to the fundamental principles of the UN Charter and to address the existing and emerging international challenges in an effective and credible manner. Her Excellency Kaja Kalas' visit is a significant milestone in Pakistan-EU bilateral relations, and today we reaffirm our resolve to transform these relations into a comprehensive and mutually beneficial partnership. Her Excellency, let me reiterate that it is my great pleasure to welcome you here in Pakistan and hope this is not going to be
the first and the last visit, but it would be one of the many visits you will make to Pakistan. Thank you so much. Over to you.